Hello friends and welcome to my channel Math Journey with SBG. Okay, today we are going to find GCD of two number by using Euclidean algorithm. And after finding GCD, we can express that GCD into linear combination of that two number. For example, in first problem we are going to find GCD of 56 and 72, and then we are going to express the GCD is equal to 56 plus 70y for some integer x and y. So first understand what is Euclidean algorithm. So Euclidean algorithm says that for an integers a and b both are positive, make use of a repeated application of division algorithm to produce following sequence of equations. तो क्या करेंगे हम डिवीजन algorithm की हेल्प लेके एक सीक्वेंस ऑफ इक्वेशंस ऑब्टेन करेंगे. तो क्या करने का फर्स्ट ए और बी इसमें से जो लार्जर नंबर रहेगा उसको ए डिवाइड करेंगे दूसरे नंबर से. फॉर एग्जांपल अगर बी लार्जर है तो b को a से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे मैंने लिखा है कि b को a से डिवाइड करेंगे तो कुछ तो क्वोशंट q1 आएगा यहाँ पे और रिमाइंडर r1 आएगा. सो b कैन बी रिटन एज a इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर r1. ओके, और रिमाइंडर पर कंडीशन रहेगी 0 लेस देन r1 लेस देन a. देन नेक्स्ट इक्वेशन डिवाइड दिस a बाय r1. a को r1 से डिवाइड करेंगे, कुछ तो क्वोशंट आएगा एंड देन समथिंग रिमाइंडर. तो अगेन एक्सप्रेस a इक्वल टू r1 इंटू q2 प्लस r2. अगेन 0 लेस देन r2 लेस देन r1. ये जो रिमाइंडर है जिससे डिवाइड किया वो उससे छोटा रहेगा, बराबर है, और 0 से बड़ा रहेगा. देन अगेन इन नेक्स्ट स्टेप में क्या करने के, ये जो r1 है इसको r2 से डिवाइड करेंगे. r1 को r2 से डिवाइड करेंगे, कुछ तो क्वोशंट मिलेगा हमको q3. ओके, और रिमाइंडर मिलेगा r3. सो r1 इक्वल टू r2 इंटू q3 प्लस r3. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहने के रिपीटेडली. कब तक करने का, जब तक हमको रिमाइंडर 0 नहीं मिलता. rn माइनस rn इंटू qn प्लस 1 और लास्ट में रिमाइंडर 0 मिलेगा. और रिमाइंडर ये 0 मिलने वाला है क्योंकि क्या होता है हर एक स्टेप में हमको जो रिमाइंडर मिलते जा रहे हैं वो पहले रिमाइंडर से छोटे मिलते जा रहे हैं. यहाँ पे r2 इज लेस देन r1, r3 इज लेस देन r2, तो रिमाइंडर छोटे छोटे होते जा रहे हैं. कहाँ पे तो उनको 0 होना ही पड़ेगा. और 0 होने के बाद यूक्लिडियन एल्गोरिथम का कंक्लूजन क्या है कि देन GCD ऑफ AB इज इक्वल टू Rn. एंड व्हाट इज Rn? Rn इज लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर. ये जो प्रोसेस है डिवीजन एल्गोरिथम हम रिपीटेडली यूज करते जा रहे हैं, उसमें जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर रहेगा Rn वो रहेगा GCD ऑफ AB. And moreover, GCD of EB also written as ax plus by for some x and y belongs to z. वो देखते हैं कैसे आएंगे x and y. तो ठीक है, रिपीटेडली यूज ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम करते जाएंगे हम, और जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर रहेगा वो रहेगा GCD of A and B. Now look at this first problem. We have to find GCD of 56 and 72, and then we have to express the GCD as a 56x plus 72y. तो पहले क्या करेंगे हम, ये जो 72 है उसको 56 से डिवाइड करेंगे. देखो 72 को 56 से डिवाइड करेंगे तो 56 इंटू 2 वो 72 से बड़ा हो जाएगा. तो 56 इंटू 1 माइनस 56 रिमाइंडर आ जाएगा 16. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, दिस 72 इज इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस 16, रिमाइंडर इज 16. So this is equation number 1. Now next step, divide this 56 by 16. ये जो 56 है उसको जो रिमाइंडर है 16 उससे डिवाइड करेंगे हम. So 16 into 3 48 and 56 minus 48 it is 8. So 56 can be written as 16 into 3 48 plus 8. This is equation number 2. Still remainder is not 0. Now look at this 16. Divide 16 by 8. So 16 can be written as 8 into 2 and plus remainder is 0. So remainder is 0. Stop dividing process.
Now look at last non-zero remainder in this process. So last non-zero remainder is 8. Therefore, GCD of 56 and 72 is equal to, actually it is last non-zero remainder. Last non-zero remainder. And therefore, GCD of 56, 72 is equal to 8. Now we have to express this GCD as a 56x plus 72y. Now look at this second last equation, equation number 2. From equation 2, we have, from equation 2, what is value of 8? 8 can be written as 56 minus 16 into 3. ये जो 16 into 3 राइट हैंड साइड को है, लेफ्ट हैंड साइड को जाने के बाद क्या हो जाएगा, 56 minus 16 into 3. Now 8 is equal to, now look at equation 1. From equation 1 we can obtain value of 16. From equation 1, what is value of 16? 16 is equal to 72 minus 56 into 1. And now substitute this value of 16 in this equation. So this 56 as it is minus what is value of 16? So 16 is equal to 72 minus 56 into 1. 72 minus 56 into 1. And into this 3 as it is. Okay. Now simplify this. So 8 is equal to 56 minus is 72. How many times? 72 into this 3. So it is 72 into 3. Now this minus minus plus 56 into 3. So 8 is equal to, now this is 56. 56 into 1 actually it is. And this is 56 into 3. So total 56 into 4 minus 72 into 3. So 8 is equal to 56 into 4. Now plus it is 72 into minus 3. So what is 8? 8 is nothing but GCD of 56 and 72 and is equal to 56 into 4 plus 72 into minus 3. Therefore, what is value of x? X is equal to 4, y is equal to minus 3. ये जो हमको चाहिए था यहाँ पे GCD of 56 and 72, 56 into some x plus 72 into y चाहिए था ना, तो यहाँ पे GCD of 56 and 72 क्या है, 56 into 4 plus 72 into minus 3. So value of x is 4, value of y is minus 3. Now number 2. Now what is second pair? GCD of number 2. We need GCD of 1769, 2378 is equal to, ठीक है, 1769 into x plus 2378 into y. ऐसे x and y हमको चाहिए. तो पहले हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज करके GCD फाइंड आउट करेंगे. सो व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? डिवाइड लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर. So if you divide this 2378 by 1769, then 1769 into 1, क्योंकि अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर बड़ा बन जाएगा, सो 1 ही क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर क्या रहेगा यहाँ पे 609. आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं यहाँ पे. So 2378, this number is equal to 1769
into quotient 1 plus what is remainder 609. Then divide 1769 by 609. Then 1769, this number can be written as 609 into 2 plus 551 रिमाइंडर. आप कैलकुलेटर से ये वेरीफाई भी कर सकते हैं. इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अगेन रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0. नाउ डिवाइड दिस 609 बाय 551. तो क्वेश्चन 1 आ जाएगा 551 और जो सब्ट्रैक्शन है वो आ जाएंगे 58. So 609 can be written as 551 into 1 plus 58. This is number 3. Now divide this 551 by 58. तो आ जाएगा 58 into 9, कैलकुलेशन करके दे सकते हैं आप, plus 29. Again remainder is non-zero, so this is number 4. Now finally divide this 58 by 29. So 58 को अगर हम 29 से डिवाइड करेंगे तो 29 into 2 क्वोशंट आ जाएगा और रिमाइंडर बनेगा 0. So remainder is 0. Therefore, what is GCD of this 1769, 2378? GCD of this two big number is equal to, again, last non-zero remainder. And what is last non-zero remainder? It is 29. So value of GCD is 29. Now to find integer x and y satisfying this condition. Now look at equation number 4, last equation, second last equation. From equation 4 we can find the value of 29. So from 4, what is 29? 29 is equal to, actually it is 551 minus 58 into 9. Okay. Now look at its previous equation, equation number 3. From equation 3 we can obtain the value of 58. जो रिमाइंडर है उसको बाकी के टर्म में एक्सप्रेस करने का और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की. तो 58 क्या बन जाएगा 609 माइनस 551 इंटू 1. तो वो वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ. ये 29 एज इट इज, 551 एज इट इज, और जो 58 की वैल्यू है वो वैल्यू आएगी 609 माइनस 551 इंटू 1 into this 9 as it is. और ये from equation 3 से हमने ऑब्टेन किया है. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो इसको. 29 is equal to 551 minus 609 into 9 से मल्टीप्लाई किया तो 609 into 9, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 551 into 9. So 29 is equal to 551, ये एक बार है और यहाँ पे 9 है तो 551 into 10 minus 609 into 9. Okay. Now look at equation number 2. 3 का होगा 2 पे जो रिमाइंडर है उसको एक्सप्रेस करो बाकी के टर्म में. तो 551 की वैल्यू मिल जाएगी हमको 1769 minus 609 into 2. तो वो वैल्यू मैं वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ. So it is 29 is equal to 551 की वैल्यू क्या है 1769 minus 609 into 2. Okay. Into this 10 as it is. ये 10 यहाँ पे मैंने सिर्फ 551 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 10 as it is, minus 609 into 9. And this is from equation 2. Okay. Simplify a little bit. 29 is equal to 1769 into 10
minus 609 into now 20, 10 into 2 20, minus this 609 into 9 as it is. So 29 is equal to 1769 into 10 as it is, minus 609 how many times? 20, and this 9, so it is into 29. Okay, now look at last equation, means first equation, equation number 1. From equation 1 we can obtain value of 609. It is 2378 minus 1769 into 1. So substitute that value. So 29 is equal to 1769 into 10 as it is, minus value of 609, it is 2378 minus 1769 into 1 into this 29 as it is. And reason, if this is from equation 1, so 29 is equal to, now this is 1769 into 10 minus 2378 into 29, this minus minus plus 1769 into 29. So 29 is equal to, now keep this 1769 as it is. Now this is into 10 and here into 29. So total how many 1769 it is? 38 1769 minus 2378 into 29. So this 29 can be written as 1769 into 38 plus 2378 into minus 29. Now what is 29? 29 is nothing but GCD of these two number 1769, 2378. This GCD is equal to 1769 into 38 plus 2378. Wait, sorry. 2378 into minus 29. So what is value of x? Here x is equal to 38 and value of, wait. Somewhere we did mistake. Here it is 39, because 10 plus 29 it is 39. So this is 39, this is 39. Okay, sorry for the mistake. So value of x is equal to 39 and value of y is equal to minus 29. So number 2 done. Now last one. GCD of 9 and 18 is equal to 9x plus 18y. GCD of number 3, GCD of 9, 18 is equal to 9x plus 18y. Okay. Now divide larger number by smaller number. So 18 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, so 9 into 2 18, 18 minus 18 0. So here 18 can be written as 9 into 2 plus 0, remainder is 0. So what is GCD? So in this case, so common factor between 18 and 9 is 9. Therefore GCD is equal to GCD of 9 and 18 is equal to actually 9. दोनों में common क्या है? 9 ही common है. Now to express this GCD as a 9x plus 18y. So how to express? Now look at this equation number 1.
to express it is. Mm, okay. So how to express GCD of 9 and 18 is equal to 9, 9 as a 9x plus 18y. So it is very easy. Note that this GCD of 9 and 18 is equal to actually 9, but this 9 is same as 9 into 1 plus 18 into 0. So what is value of x? Therefore x is equal to 1 and value of y is equal to 0. Okay. So problem number 3 also done. If you have any doubt, you can ask me in comment section. Okay. Thank you.